ॐ श्रीराम राम रामेति रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 113 of the Ayodhya Kandam, which has 25 verses. Departed back for Ayodhya along with sage Vashishta and others, Bharata pays his respect on the way to sage Bharatwaja and appraises him of what had happened at Chitrakuta and also of the pair of wooden sandals that he had received from Sri Rama as the latter's representative. Proceeding further, crosses the river Ganga and Yamuna along with his followers. Departing from Sringaverpura, he catches sight of Ayodhya and points out to Sumantra its gloomy appearance. आज हम त्रयोदशी अधिक शतम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 25 श्लोक है। भरत का भारद्वाज से मिलते हुए अयोध्या को लौट आना। ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतः तदा आरुरोह रथं हृष्टः शत्रुघ्नसहितः तदा। तदंतर श्री रामचंद्र जी की दोनों चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखकर भरत शत्रुघ्न के साथ प्रसन्नता पूर्वक रथ पर बैठे। Then placing the pair of wooden sandals on his head, Bharata for his part, full of joy and accompanied by Shatrughna, forthwith ascended the chariot. वसिष्ठो वामदेवश्च जबालिश्च दृढव्रतः अग्रतः प्रययुः सर्वे मंत्रिणो मंत्रपूजिताः। वशिष्ठ वामदेव तथा दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले जबाली आदि सब मंत्री जो उत्तम मंत्राना देने के कारण सम्मानित थे, आगे आगे चले। The councillors Vashishta and Vamadeva and Jabali of steadfast vows and all the others, adored for their sage counsel, travelled in the forefront. मंदाकिनीं नदीं रम्यां प्राङ्मुखास्ते ययुस्तदा प्रदक्षिणं च कुर्वाणश्चित्रकूटं महागिरिम्। वे सब लोग चित्रकूट नामक महान पर्वत की परिक्रमा करते हुए परम रमणीय मंदाकिनी नदी को पार करके पूर्व दिशा की ओर प्रस्थित हुए। Keeping the lovely river Mandakini and the great Chitrakuta mountain to their right, they then departed with their face turned towards the east. पश्यन् धातु सहस्राणि रम्यानि विविधानि च प्रययौ तस्य पार्श्वेन ससैन्यो भरतस्तदा। उस समय भरत अपनी सेना के साथ सहस्त्रों प्रकार के रमणीय धातुओं को देखते हुए चित्रकूट के किनारे से होकर निकले। Seeing on his way thousands of minerals of every description, which were charming to Bharata, accompanied by his army, now proceeded along the northern side of the aforesaid mountain. अदूरात् चित्रकूटस्य ददर्श भरतः तदा आश्रमं यत्र स मुनिर्भरद्वाजः कृतालयः। चित्रकूट से थोड़ी ही दूर जाने पर भरत ने वह आश्रम देखा जहाँ मुनिवर भारद्वाज जी निवास करते थे। Not far from Chitrakoot, Bharata now beheld the hermitage in which sage Bharatwaja had taken up his abode. स तम आश्रमम् आगम्य भरद्वाजस्य वीर्यवान् अवतीर्य रथात् पादौ ववन्दे कुलनन्दनः। अपने कुल को आनंदित करने वाले पराक्रमी भरत महर्षि भारद्वाज के उस आश्रम पर पहुंचकर रथ से उतर पड़े और उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। Reaching the said hermitage of Bharatwaja and alighting from his chariot, the valiant Bharata, the delight of his race, saluted the sage's feet. ततो हृष्टो भरद्वाजो भरतं वाक्यम् अब्रवीत् अपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम्। उनके आने से महर्षि भारद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भरत से पूछा, तात क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ? क्या श्री रामचंद्र जी से भेंट हुई?
Full of delight, Bharatwaja thereupon spoke to Bharata as follows. Did you meet Sri Rama, my dear son, and has your purpose been accomplished? एवमुक्तः स तु ततो भरद्वाजेन धीमता प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतो धर्मवत्सलः। बुद्धिमान भारद्वाज जी ने इस प्रकार पूछने पर धर्म वत्सल भरत ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। Questioned thus by the wise Bharatwaja, the celebrated Bharata for his part, who was lovingly devoted to righteousness, then replied to Bharatwaja as follows. स याचमानो गुरुणा मया च दृढविक्रमः राघवः परमप्रीतो वसिष्ठं वाक्यम् अब्रवीत्। मुने, भगवान श्री राम अपने पराक्रम पर दृढ़ रहने वाले हैं। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, गुरुजी ने भी अनुरोध किया, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुदेव वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा। Supremely delighted on being solicited by my preceptor and myself to return to Ayodhya, the celebrated Sri Rama, a scion of Raghu, of unrelenting prowess, replied to Vashishta as follows. पितुः प्रतिज्ञां तामेव पालयिष्यामि तत्त्वतः 14 वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम। मैं 14 वर्ष तक वन में रहूं, इसके लिए मेरे पिताजी ने जो प्रतिज्ञा कर ली थी, उनकी इस प्रतिज्ञा का ही मैं यथास्वरूप से पालन करूंगा। I shall without doubt unequivocally implement that pledge of my father given to my mother Kaikeyi, which was to the effect that I should actually remain in exile for 14 years. एवमुक्तो महाप्राज्ञो वसिष्ठः प्रत्युवाचः वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं राघवं वचनं महत्। उनके ऐसा कहने पर बात के मर्म को समझने वाले महाज्ञानी वशिष्ठ जी ने बातचीत करने में कुशल रघुनाथ जी से ये महत्वपूर्ण बात कही। Spoken to as aforesaid, the highly enlightened Vashishta, who knows how to speak, actually addressed the following momentous words to Sri Rama, a scion of Raghu, who is adept in expression. एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुके हेमभूषिते अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेमकरो भव। महाप्राज्ञ, तुम प्रसन्नता पूर्वक ये स्वर्ण भूषित पादुकाएं अपने प्रतिनिधि के रूप में भरत को दे दो और इन्हीं के द्वारा अयोध्या के योग क्षेम का निर्वाह करो। Full of delight, please gift these wooden sandals decked with gold to Bharata. Existing in the form of these sandals, supply the needs of the people in Ayodhya and safeguard their interest. O highly intelligent prince. एवं मुक्तो वसिष्ठेन राघवः प्राङ्मुखः स्थितः पादुके हेम विकृते मम राज्याय ते ददौ। गुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर पूर्व विमुख खड़े हुए श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या के राज्य का संचालन करने के लिए ये दोनों स्वर्ण भूषित पादुकाएं मुझे दे दी। Requested in these words by Vashishta, Sri Rama, a scion of the Raghu, stood on the sandals facing the east and allowed me to take the aforesaid pair of wooden sandals adorned with gold for carrying on the rule on his behalf. निवृत्तो अहम् अनुज्ञातो रामेण सुमहात्मना अयोध्यामेव गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुभे। तत्पश्चात मैं महात्मा श्री राम की आज्ञा पाकर लौट आया हूँ और उनकी इन मंगलमयी चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या को ही जा रहा हूँ। Departed as permitted by the exceptionally high-souled Rama, I am returning to Ayodhya itself, taking the blessed pair of sandals with me. एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः भरद्वाजः शुभतरं मुनिर्वाक्यम् उदाहरत्। महात्मा भरत का ये शुभ वचन सुनकर भारद्वाज मुनि ने ये परम मंगलमय बात कही। Hearing the happy report of the high-souled Bharata, Sri Bharatwaja made the following reply, which was still more agreeable to hear. नैतत् चित्रं नरव्याघ्रो शीलवृत्तविदाम्बरे यधार्यं त्वयि तिष्ठेत्तु निम्नो सृष्ट निबोधकम्।
भरत, तुम मनुष्यों में सिंह के समान वीर तथा शील और सदाचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हो। जैसे जल नीची भूमि वाले जलाशय में सब ओर से बहकर चला आता है, उसी प्रकार तुम में सारे श्रेष्ठ गुण स्थित है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। It is no wonder that even as water discharged from above collects into a depression, noble conduct for its part should find its place in you, a tiger among men, and the foremost of those who knows how to behave well and conducts themselves with propriety. अनृणः स महाबाहुः पिता दशरथः तव यस्य त्वम् ईदृशः पुत्रो धर्मात्मा धर्मवत्सलः। तुम्हारे पिता महाबाहु राज्य दशरथ सब प्रकार से उन्नत हो गए, जिनके तुम जैसे धर्म प्रेमी एवं धर्मात्मा पुत्र हो। Free from all debt is your mighty armed father, the celebrated Dasharatha, of whom was born such a pious son as you, fondly devoted to virtue. तं ऋषिं तु महाप्राज्ञम् उक्तवाक्यं कृताञ्जलिः आमन्त्रयितुम् आरेभे चरणौ उपगृह्य च। उन महाज्ञानी महर्षि के ऐसा कहने पर भरत ने हाथ जोड़कर उनके चरणों को स्पर्श किया, फिर वह उनसे जाने की आज्ञा लेने को उद्यत हुए। Bharat, for his part, stood with folded hands before the highly wise Rishi sage Bharatwaja, who had spoken as above, and clasping his feet, proceeded to take leave of him. ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः भरतस्तु ययौ श्रीमान् अयोध्यां सह मन्त्रिभिः। तदंतर श्रीमान भरत बारंबार भारद्वाज मुनि की परिक्रमा करके मंत्रियों सहित अयोध्या की ओर चल दिए। Going clockwise round Bharatwaja as a mark of respect, again and again, the glorious Bharata, for his part, then left for Ayodhya along with his counselors. यानैश्च शकटैश्चैव हयैर्नागैश्च स चमूः पुनर्निर्वृत्ता विस्तीर्णा भरतस्य अनुयायिनी। फिर वह विस्तृत सेना, रथों, छकड़ों, घोड़े और हाथियों के साथ भरत का अनुसरण करती हुई अयोध्या को लौटी। That large army following Bharata returned along the same route on chariots and bullock carts, as well as on horseback and on the back of elephants. ततस्ते यमुनां दिव्यां नदीं तीर्त्वा उर्मिमालिनीं ददृशुः तां पुनः सर्वे गंगां शिवजलां नदीं। तत्पश्चात आगे जाकर उन सब लोगों ने तरंग मालाओं से सुशोभित दिव्य नदी यमुना को पार करके पुनः शुभ सलीला गंगा जी का दर्शन किया। Having crossed the divine river Yamuna, adorned with a succession of waves, they all then beheld once more the river Ganga, containing holy waters. तां रम्य जल संपूर्णां संतीर्य सह बान्धवः शृंगवेरपुरं रम्यं प्रविवेश स सैनिकः। फिर बंधु बांधवों और सैनिकों के साथ मनोहर जल से भरी हुई गंगा के भी पार होकर वह परम रमणीय श्रृंगवेरपुर में जा पहुंचे। Having easily crossed with his kinsfolk the aforesaid river, which was brimful with delightful waters, Bharata with his army men duly entered the lovely town of Shringverpura. शृंगवेरपुरात् भूय अयोध्यां समददर्शः। अयोध्यां तु तदा दृष्ट्वा पित्रा भ्रात्रा विवर्जिताम्। श्रृंगवेरपुर से प्रस्थान करने पर उन्हें पुनः अयोध्यापुरी का दर्शन हुआ, जो उस समय पिता और भाई दोनों से विहीन थी। उसे देखकर भरत ने दुख से संतप्त हो सारथी से इस प्रकार कहा। भरतो दुःख संतप्तः सारथिं च इदम् अब्रवीत्। सारथे पश्य विधवस्था अयोध्या न प्रकाशते। निराकारा निरानंदा दीना प्रतिगतस्वना। सारथी सुमंतर जी, देखिए अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई, अतः वह पहले की भांति प्रकाशित नहीं होती। इसका वह सुंदर रूप वह आनंद जाता रहा। इस समय ये अत्यंत दीन और नीरव हो रही है।
Proceeding from Sringverpura, he vividly saw Ayodhya once more, so the tradition goes. Seeing Ayodhya deserted by his father and elder brother, Sri Rama, Bharata, for his part, felt sore stricken with agony at that moment and spoke as follows to the charioteer Sumantra. Look, O charioteer, desolate and shorn of its grace, bereft of joy, wretched and lifeless, Ayodhya does not look bright as before. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 13 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 113वां सर्ग पूरा हुआ। Thus, since Canto 113 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।